कल रह गया था वो करवाना. So let's roll. Hey guys, good morning. Welcome back to the vlog. We are up and above for the day. दिन शुरू हो चुका है हमारा और today is 6th of March and we are going to Vadodara. Our car is ready and the shining जो हमने कार वॉश करवा ली है and we are wearing this. Hey guys, so we are ready to leave और हमें जाना है. अभी तो फ्यूलिंग करवाना बाकी रह गया, कल रह गया था वो करवाना. So let's roll. And today the car looks beautiful. Let's roll out, boys. Okay, so we are done with the fueling and we are leaving for Vadodara right now. हम आए हैं हमारे पुराने घर पे थोड़ा सा जो काम है वो ख़त्म करने के लिए and that's the time then we are leaving. Yep. So me, mom and dad are going. Let's roll out, guys. So guys, we have finally entered the Vadodara Express Highway and thanks to my dad who is helping me to shoot this. वरना क्योंकि हाईवे इज़ अ बिट रिस्की, सो यहाँ पे ये सब ना करे तो ज़्यादा अच्छा है. So we have entered Vadodara city right now and as you can see, अगर यहाँ से हम राइट लेते हैं तो we enter Vadodara and that is why this traffic jam is there. बहुत सारा ट्रैफिक है आगे पीछे हर जगह. Okay, so guys, we have entered Vadodara finally and we are just 80 kilometers away from Kevadia, that is Statue of Unity. और हम जहाँ जा रहे हैं that place is only 40 kilometers away from Statue of Unity. एंड बेसिकली जो फॉरेस्ट सफारी अभी नई नई बनी है, जंगल सफारी, वो यहाँ पे बनने वाली थी जहाँ हम आज जा रहे हैं, लेकिन कुछ नॉर्म्स के हिसाब से वो नहीं बन पाया. सो लेट्स सी. सो यू सी दिस वे लीड्स डायरेक्टली टू केवडिया, दैट्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एंड हेंस द रोड्स आर सुपर स्मूथ. माई कार इज ऑन अ क्रूज मोड एंड इट इज ड्राइविंग, सो या नॉट अ टेस्ला दो, सो आई हैव टू स्टीयर इट ऑफ कोर्स, बट स्टिल. So yeah, and that's a pretty good way to travel around. Jaydev, are you listening, man? We need to plan a road trip as soon as possible. तब हम और एक crazy vlog shoot कर सकते हैं with your extra wisdom, I guess. Just look at this beautiful road. And the place we have entered is called as Vajeria, and just see this, just behold the beauty of the roads, guys. There's an entire mountain range that side. That's it. Ati sundar, like ati sundar. So we are almost at the destination and it was around a drive of 2.5 hours with a moderate speed, not overspeeding of course. And just this place is beautiful. This is my second time here. The roads are quite better than they were before, of course. The best thing about this place is this comes under a forest area, and so no industry permission will ever be given in this area, and that's I think the best decision ever made by the government. And I have cross-checked it when I visited this place last time when we came to Statue of Unity. People, so what's up? We are done with the function part and हम गए थे उस साइड एक फार्म हाउस पे. सो नाउ वी आर बैक एट द विलेज. आज की स्पेशल चाय हमारे लिए बना रहे हैं श्री श्री अजीम भाई. प्लीज़ शक्ल पे मत जाइए, इस इलाके के डॉन है. अरे કેમ નહીં ચડાવજો ને, આખો એપિસોડ જશે આ. So we're using this place as an outhouse, we can say, just to hang out. And सब लोग हैं वहाँ पे फार्म हाउस पे. Had a great time today. Function is good.
वी आर लिविंग फॉर संखेड़ा. वो अपने वुड वर्क्स के लिए बहुत फेमस है અને આવી રીતે ના જોવું મને બહુ આમ કોમ્પ્લેક્સ ફીલ થાય છે કે મેં નવું નવું ફરી ચાલુ કર્યું છે એટલે. So that place is very much famous for its woodworks, and let's see. So hey guys, we are at Sankheda right now, and I am eating this famous chocolate pan from Shri Jala Cold Drinks. This parlor is run by two young guys, and like phenomenally they are doing their business and very nice. बहुत अच्छे से चल रहा है. That is a very impressive thing, you know. So let's try it out. And so our work is done in Vadodara and we are just about to leave. And देख सकते हैं पीछे गाड़ी तो दिख नहीं रही है और हम अजीम सेठ के साथ है बाइक पे अभी फिलहाल. That after a long time. શું ભાઈ કેવું રહ્યો અજીમ સેठ આજનો દિવસ? एंड इट वॉज गुड एक्चुअली. हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे उनके वहाँ फंक्शन था और उसके लिए हमें वडोदरा आना पड़ा था. So yeah, the day was good. We had some good food. So we are done with the trip at Vadodara. The day was amazing and look at this view. So we took a chai break near Vadodara, but the problem is अभी डिनर का टाइम हो गया है यहाँ पे. So we don't have any tea anywhere, like not here. So let's take just a washroom break and that's all. And we will be just heading right away towards Ahmedabad straight away. Let's roll. So we are back home, just reached right now and it's 9:35. And the day was amazing, so good. There were some moments that I did not shoot, but yeah, even मैंने functions का भी कोई भी शॉट नहीं लिया. The reason being that I wanted to let them have their privacy because अभी हमारे यहाँ basically अहमदाबाद गुजरात and surroundings and that was a village area of course. So वहाँ पे इतना ज़्यादा you know they are not open for stuff like a person just going out and you know shooting there everything. So yeah, but the day was amazing, pretty great, so much positive vibes. And जब हम रास्ते में आ रहे थे ना तो बहुत सारे अच्छे गाने सुन रहे थे, बहुत सारे अच्छे गाने. और मैं और पापा तो तेरा घाटे पे वाइब कर रहे थे. क्या या सो कुछ सॉन्ग्स ऐसे थे ना कि सुनने के बाद ऐसे लगता है कि वाई कांट लाइफ बी जस्ट लाइक दिस, यू नो. यू आर ऑन रोड, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, you are getting to have such experiences, you are getting to know different types of people, you're getting to learn about the experiences they are having in their lives, right? वो किन संघर्षों से अपनी ज़िंदगी में गुजरे हैं, वो क्या चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी से परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पर देखना चाहते हैं, किन के साथ उसे देखना चाहते हैं, वो बहुत मायने रखता है. और अब उनके साथ सिर्फ 2 मिनट बैठ के सिर्फ हंस के बातें कर लो ना. इस दुनिया में ना सुनना और बातें करना ये दोनों बहुत ज़रूरी है. बातें खुल के करो और सुनो भी अपने कान खोल के. बिकॉज हम जब पॉलिश करके वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, when we use the words by polishing them, we try to mold them to sound as you know कि ये परफेक्ट लगना चाहिए. अगर मैं कोई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो परफेक्ट लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता. समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लेट इट बी, राइट?
So yeah, so that's all for today guys, and thank you for watching this video. अगर आपने यहाँ तक देखा है, बहुत सारे कट्स में आ रहे वीडियोस, आई नो, और मुझे पता भी है वो कट्स में नहीं आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट, बट एज अ क्रिएटर, एज एन एडिटर, as a videographer, it is my responsibility to improve day by day. Although I'm using a phone right now, but soon we will see how things goes. So thank you for watching this vlog guys. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. See you soon.